Hi, welcome to the Aesthetic Zoo podcast. I'm your host Pranjali, and I hope you're liking all the new episodes we are putting out there. Today we have a guest who's an author, entrepreneur. He has his own IT firm, and he has written multiple articles, and he has his own book. So, without further ado, let's talk to Sumedh both. Hi, Sumedh. How are you? Hello, Pranjali. Hi, I am good. Thank you. Thank you for being on the podcast. Thank you so much for having me. Thank you so much inviting me. So let's start from tell us about yourself. Like we know, but in depth we would like Yeah, to know. yeah. So, about me, I just want to share a little bit. First of all, I just want to tell you that from which background I'm coming. My mother is already a social reformer, social worker. Okay, so I was born in a small town that is called Malachkand. It is in Madhya Pradesh. Okay, so my Hmm. dad was Yeah. in my dad was in Air Force, so the job was moving kind of. But he got the job in MP, Madhya Pradesh. So there we settled in Malachand. Okay, so that is a Hmm. copper mines. Okay, so Hmm. living there, we were kids. So mom and dad from out of उनके काम जो भी है वर्क में से समय निकाल के दे यूज्ड टू गो फॉर some meetings, some gatherings. तो हम लोग छोटे छोटे थे तो हमें पता नहीं था. So me and my sister, so वो mom dad हम सभी को लेके जाते थे. Hmm. सो वो जो मीटिंग्स होती थी वहाँ पे जो गैदरिंग्स होती थी उसे संगोष्ठी कहा जाता था, मतलब साथ में बैठ के बातें करना. ओके, सो Yeah. वहाँ पे जो डिस्कशन होता था इट्स ऑल अबाउट धम्मा एंड बुद्धिज्म एंड Hmm. द वे ऑफ लाइफ, या फिर कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, व्हाट बाबा साहब हैज गिवन. सो फ्रॉम द वेरी यंग एज आई गॉट टू नो मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लाइक जितना समझ में आता था, बिकॉज द थिंग इज कि हम जिस तरह के माहौल में रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो उस तरह की चीजें हमारे अंदर इनकलकेट होती जाती है. सो Yeah. उस Yeah. वजह से मेरा अपब्रिंगिंग इस तरह से हुआ. सो मोस्टली आई हैव अटेंडेड मोस्ट ऑफ द मीटिंग्स फॉर अराउंड 8 hours और समथिंग लाइक दैट. सो इस तरह से मेनी थिंग्स जो कि ऑटोमेटिकली मुझे काफी यंग एज से पता चलने लग गई थी. So that was one thing. Okay, so यहाँ से MP जो है मलाजखंड, वहाँ से मेरा स्कूलिंग हुआ. And after that, being Maharashtrian and belonging from Nagpur, so then we came back, right? So we came back to Nagpur, and then उसके बाद में Nagpur से college and all this. Then I have done engineering from Traditional College and everything done. Then after that जो एक IT बैकग्राउंड या फिर इंजीनियरिंग के बच्चों का जो ड्रीम होता है, गोइंग टू पुणे, हैविंग जॉब, हैविंग फन, ऑल दिस थिंग. So I have a very good friend circle. Okay, so enjoyed a lot. But at the back of the mind, the thing during your upbringing was like the thoughts of Baba Sahib Ambedkar and Dhamma and Buddhism. So slowly, reaching this thing of knowing Baba Sahib Ambedkar, knowing Buddhism. So ये interest बढ़ते ही जा रहा था. So Hmm. with that, so with that अचानक फिर then after the first year or something of my engineering, after that my father booked the Vipassana course for everyone, like the whole family. So me, my sister, father and mother. So हम लोग सब साथ में, like we went for the Vipassana Hmm. course. So that was one of the very awakening or very kind of very different experience for me in my life. So वहाँ से फिर before that, Vipassana course. Before that, I was like very shy and shy kind of guy who used to speak very less or something like that. So that changed my life a bit. Okay, so this is all about me, knowing the background, and then after that, doing all IT startups में काम किया, and IT से related digital marketing, business development, everything. So I'm more kind of adventurous guy who likes to explore new things. So मैंने काफी ऐसे अलग अलग kind of
टेक्नोलॉजीज में एंड बिजनेस डेवलपमेंट में इस तरह के जॉब्स में काफी मैंने एक्सप्लोर किया एंड देन आफ्टर दैट आई गॉट बोर्ड ऑफ दिस फन एंजॉयिंग एंड एक्सप्लोरिंग एंड देन आई थॉट कि अच्छा ये चीज मैं काफी दिनों से कर रहा हूँ सो लेट्स डू फॉर योर ओन लाइक चलो खुद का स्टार्टअप करते हैं then after that and my sister moved to UK 2018 and then 2018 I came back to Nagpur and then I started my IT firm. It is Stars Technologies and it is situated in Dharambeek, Nagpur. So like from there like दोनों की चीज साथ में चल रही है IT वाला बैकग्राउंड भी एंड देन हमारा जो एक मूवमेंट बोल सकते हैं जिसको या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कि लाइक काफी यंग एज में हमें पता चली तो वो एक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कि ये चीज नॉलेज जो है और ये कुछ अच्छी चीजें हैं ये आपको अपने दोस्तों को आपके फैमिली को आपकी कम्युनिटी को या फिर सभी को ह्यूमैनिटी को देनी चाहिए सो इस तरह से चीजें बनती गई और उस वजह से वो जो बुक है वो कुछ राइटिंग्स हो गई ये सब चीजें तो वो बुक का भी आइडिया वहीं से आई थी बीइंग इन द सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग थिंग्स सो ऐसा लगा यार कैसे इसको हर जगह पे कैसे पहुंचाया जाए सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग so वैसे करते करते so within the span of 2-3 years I completed that book. Yeah. Okay. So you were here in Pune. Yeah, I was in Pune. So I lived there for around 5 years. So I was doing job and everything all fun. And you have been in Nagpur. अभी कितने साल से you are Yeah. in Nagpur? So from 2018, I'm in Nagpur. Like I came back in 2018. So like from 18 till now. So it's been 5 years. So I'm in Nagpur. So I'm doing this IT business and everything in Nagpur only since then. But Pune आना जाना चलता रहता है. Like वहाँ पे IT वाले friends हैं, सभी friends हैं. Most of them they some of them moved to Australia, some moved to Singapore. But still Pune में काफी friends हैं. So like उनसे होता रहता है मिलना. So regarding this business and IT thing. Yeah. Okay. Okay. Yeah, Yes. so I get the idea. Like जब आपके घर Mm. में ही होता है, you know, that process, thinking and thoughts. Even my father is more into social work rather than his government job. His plan is Exactly. to retire as soon as possible and just join the Mm. movement. So I can Good, good. relate. You, मतलब Yes. पुष्पा जी, your mom, Yeah. आपको घर Yes. से ही वो upbringing मिला, so you know it made True. थोड़ा easy या फिर आपको access या फिर knowledge थोड़ा you know जल्दी मिल गया. You won't have बिल्कुल, to like research बहुत सारा. घर में ही था तो you just बिल्कुल। grasped and आपका भी interest था उसमें, so you are just carrying forward her legacy, I would say. Tell us about your book. या ओके सो माय बुक सो जैसे मैंने बताया कि 2-3 साल पहले से ही लाइक एक बहुत सारी चीज़ें हैं देन लाइक व्हेन यू गो इनटू मेडिटेशन विपस्सना यू बिकम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स सो I started like observing things in society, how people behave, why they behave like this. So this kind of study is called epistemology. Okay, so study of human behavior and their जो progression हो रहा है तो उसको epistemology बोला जाता है. तो उस तरह का कुछ डेवलप हो गया ऑटोमेटिकली बीइंग इन द सोसाइटी स्टडीइंग एंड एवरीथिंग तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे कुछ अगर कुछ वो कॉन्टेक्स्ट के बारे में किसी को बताना है सो उस समय में मैं आई कैन नॉट से बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी टू हैव अ चैट विद समवन उनसे बात करके उनको समझाना सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी सो आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट कन्वर्ट दिस ऑल दिस थिंग जो हम किसी एक को बता सकते हैं दो को बता सकते हैं let's convert this into a book and like as many people they can purchase this book or they can have this access to this thing जो मुझे ऐसे लगती है कि ये पता चलना चाहिए so the book title is why we are educated agitated but not organized okay so ये title है उसका so the title the first thing Dr. Ambedkar has given us this कि you should educate, agitate, and be organized. Okay. Mm-hmm. So the thing is, we have got educate. So what I was telling you. Okay, so I named it as why we are educated, agitated, but not organized. Okay. Yeah. So like Dr. Babasaheb Ambedkar has given us this, हमको ये slogan बोल सकते हैं या फिर हमको ये एक पूरा summary एक crux दिया हुआ है उन्होंने कि educate, agitate, and be organized, right? Mm-hmm. So Yeah.
we, yeah, so people they got educated. Okay, so education लेने के बाद में क्या, like accumulation of money करना है या क्या करना है? So उसके बाद से आपने ये भी बताया कि cultivation of mind would be the ultimate goal of your life. Okay, सो एजुकेट हो गए हैं, देन उसके बाद में एजिटेट भी कर रहे हैं, लाइक समहाउ वी आर फाइटिंग फॉर आवर ओन या फिर फॉर कम्युनिटी या फिर कुछ चीजों के लिए कर रहे हैं, लेकिन द एजुकेशन मीन्स नॉट द फॉर्मल एजुकेशन ओनली। एजुकेशन लेके जॉब्स लेके या फिर डूइंग समथिंग गुड, दैट इज फाइन, रिस्पेक्टेबल लाइफ जीना, दैट इज गुड, बट एजुकेशन मीन्स द एक्चुअल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन ऑफ धम्मा, एजुकेशन ऑफ बुद्धिज्म। ओके, knowing the Yeah. ultimate truth, that is education. And after that agitation for what? So agitation for the truth, जो truth है वो सामने आना चाहिए, for that we have to agitate and be organized। लेकिन अगर एक व्यक्ति करेगा तो उसका जो असर होगा या फिर उसका जो बोल सकते हैं कि रीच होगा थोड़ा लिमिटेड होगा, बट ज्यादा लोग हम लोग ऑर्गेनाइज होकर अगर करते हैं, सो इट इट बिकम्स पावर। ओके, सो उस तरह Yeah. से वो काफी अच्छे से हो सकता है। जी. But the thing is we cannot, why we are not getting organized, like still we see in our society that अलग-अलग groups है, then इस group का इस group से नहीं बन रहा है, अलग-अलग लोग हैं तो इस व्यक्ति का उस व्यक्ति से नहीं बन रहा है, so ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, right? So that is the problem। तो वो प्रॉब्लम फिर वो नेक्स्ट सोसाइटी में जाने के बाद समझ में आता है, तो वो पिन पॉइंट मतलब कैसे हुआ क्या हुआ। तो बीइंग इन द सोसाइटी, अंडरस्टैंडिंग पीपल, सो लाइक थोड़ा साइकोलॉजी का स्टडी करके, थोड़ा कुछ लोगों से मिलके, थोड़ा बीइंग विद द मॉन्क्स, like going outside, like I've been to Thailand, I've been to many other countries where people practice meditation, they practice different things। So उससे समझ में आता है कि like human being का एक साइकोलॉजी होता है, उसका ब्रेन प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। एंड मैनी लाइक हम काफी मूवीज भी देखते हैं, इफ यू सी द मैट्रिक्स और मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज आर देयर हॉलीवुड। सो उसमें like we understand things कि how human being develop and what's happening with them। Okay, so वहाँ से थोड़ा आइडिया है कि okay, so this is the conditioning of mind, because of conditioning of mind हमारा एक कैरेक्टर बन गया है या तो फिर एक तरह की सोच बन गई है ना, हम लोग एक पर्टिकुलर वे में सोचते हैं। सो उसकी वजह से जो हमारे दिमाग में जो चल रही जो चीजें हैं, सोसाइटल जो फाउंडेशंस है या फिर सोसाइटी ने दिए हुए कुछ जबरदस्ती के जो हमेशा फॉलो करने वाले रिचुअल्स है, उसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है उस तरह से फंक्शन करता है कि वी आर इनटू ऑल दिस थॉट प्रोसेस, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइज ना हो पाए, राइट। सो उसमें वन ऑफ द थिंग कि ऑर्गेनाइज नहीं हो पाने का कि रैशनल थिंकिंग सही नहीं है ना। बीइंग इमोशनल, व्हेन योर इमोशनल माइंड इज लाइक वेरी मच बोल सकते हो उसको कि डोमिनेटिंग है ना। सो अगर आपका इमोशनल ब्रेन ही काम कर रहा है हर जगह पे, सो यू कैन नॉट be intellectual, you cannot think of things in rational way। तो उस वजह से इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि लाइक यू टेक डिसीजन आउट ऑफ इमोशन, ठीक है। उसमें फिर यू फाइंड समथिंग, तो क्या होता है कि किसी ने कुछ कर दिया तो यू ऑलवेज फाइंड कि इसमें क्या मेरा फायदा नहीं हो पाया है ना। सो ऑल दिस थिंग, सो व्हेन यू बिकम ओपन टू थिंग्स, व्हेन यू हैव दिस नॉलेज ऑफ बोल सकते हैं कि just that which is the ultimate knowledge, या फिर the knowledge of dhamma, when you get this knowledge, so you become above and beyond of all this kind of thing, जो छोटी छोटी चीजें जिसमें कि हम कभी अपना फायदा सोचते हैं, कभी हमारा नाम सोचते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें, सो लाइक ये जो ईगो होता है, सो ईगो नीड्स ऑल दिस थिंग। ईगो नीड्स आपका position, ego needs the chair, ego needs, you should be respected, ego needs all this thing। The person who is a knower of the things, तो उसको कोई चीज की जरूरत नहीं होती, दे जस्ट डू देयर वर्क। ओके, so the thing what is happening in the society, people are doing work of whatever kind of work they are doing, so people are doing work for their name, for their fame, they've been respected, they've been called, so this is a work of ego। Okay, but at the same time this person or someone who really wants to work, so they will try to understand people। Okay, they want people get organized, they don't want that they should be on the top or they should be only respected। What they do is they bring other people with them, those who are at at a lower chain, बोल सकते हैं, या फिर in the pyramid, those who are on the baseline। Okay, so they bring them to the front। Okay, so such kind of leadership will be needing। So that's why we got educated, then we are agitating, but we are not getting organized, so how we can be organized? So when we understand dharma, when we completely understand Buddhism, then we become one with the nature, one with self,
एंड आफ्टर दैट वी कैन गेट ऑर्गनाइज्ड, क्योंकि जब तक ये ईगो रहेगा, जब तक ये चीज़ें रहेगी, मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली चलने वाली, माइंड कंडीशनिंग जो हो चुकी है उसके अकॉर्डिंगली, सो एवरी डे यू हैव टू ब्रेक योर own habits. Every day you have to go deep down into your subconscious, and then you have to change your patterns. You have to change your, neural patterns. You have to change your thinking, and you should be ready, every day task. Like, okay, this is my pattern, this is my habit, and this is how I think. So you have to break that habit, that pattern every day. So I tried to, put few of the examples and few of the things, few of the description in the book, how you can, change your brain patterns, and how you can, change your emotion. So everything needs like 45 days to change. Okay, so with knowledge, with wisdom, with study, with being with the right people, you can really do that. You can achieve that. So it is achievable. Yeah. So that's why I thought कि ये चीजें कुछ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो लोग Mm-hmm. those who didn't understand. So that's why I tried to write the thing, and yeah, that's all about my book. Yeah. So, you also mentioned that meditation. You went to Yep. meditation camp and then to Yes. Thailand, and you Yeah. have Yeah. you also mentioned, but I noticed that you are kind of inclined towards self-help. I feel like you are saying we Yes. have to Yes. change our thought patterns and Exactly. right. Can you tell us about that? मतलब कहाँ से Yeah. आपको when you felt the need of read self-help books or you know Mm-hmm. yeah that Mm-hmm. part. सी द थिंग इज़ कि मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि मुझे ये पढ़ना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। द थिंग्स आर हैपनिंग ऑटोमैटिकली, आई वुड से, लाइक द थिंग्स आर हैपनिंग कि बीइंग इन द सोसाइटी व्हेन यू ऑब्जर्व थिंग्स यू गॉट टू नो, तो आपके सामने ही ऐसे सिनेरियोज आएँगे कि जिसमें यू नो द आंसर, लाइक इफ समवन इज़ सफरिंग, सो आई थिंक आई एम एन एम्पैथ, so that's why मुझे ऐसा लगता है कि if someone is suffering, so I see and I go deep down and understand the problem and I know the answer. Okay, but Hmm. at that time my energy is also important. I have to save my energy. I have to, so how ठीक है, उस time में I can Hmm. help one person, but if I write, if I give this to people, so many can be helped. Okay, सो Hmm. द थिंग इज़ कि ये इस वजह से, लाइक हेल्पिंग पीपल वाला जो एक नोशन है, उस वजह से लाइक आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग थिंग्स लाइक दिस कि यार हाँ, इस वजह से हम मुझे लाइक इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है ना? सो हाँ. हमको उसको कैसे, हाँ, तो उसको कैसे कैसे बढ़ाना है? तो उसके लिए फिर उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़ लिया, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री देख ली, या तो फिर कोई कुछ चीज़ें देख ली इधर-उधर, है ना? सो Hmm. ये सब चीज़ें, हाँ, सो ये सब चीज़ें मतलब बीइंग एन एम्पैथ या फिर एम्पैथी के कारण हम लोग को ये करना पड़ रहा है कि वी हैव टू डू थिंग्स, ऐसा है। सो दैट्स व्हाई लाइक मैं लाइक आई बीइंग इनटू थिंग्स एक्सप्लोरिंग, है ना? किस तरह से किया जा सकता है उसको, और सो लाइक ये दैट वाज़ वन ऑफ द मोटिवेशन कि किस तरह से और लोगों को हेल्प की जा सकती है, तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसका क्या सॉल्यूशन है? So like because Hmm. of that, more and more things, yeah, like coming in mind, and more things like just observing इस तरह से. So that was one of the things that was happening. So this is the inspiration we can say कि इस वजह से वो आया ऐसा है. Hmm. Yeah, even behind the book, we can say Mhm. this is the motivation. Behind the book, Yes, this yes. is the motivation. Yes, Yeah. yes, absolutely, absolutely. Behind the book, like book के वजह, like book लिखने का भी वही वजह है. Like you want to reach people. Like what is the best way we can reach people, right? है ना? So like I don't want कि like, everyone has their niche, right? So I am not more kind of कि social media पे like बहुत ज़्यादा every day you have to speak, So because there are lots of energy, lot of people, right? So you have to deal with them and everything. So I just really wanted to save my energy. So that's why like I'm like okay, that is the best thing. And ये भी कर सकते हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुँचने के लिए, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचने के लिए बुक एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग लाइक लोगों तक
अच्छी तरीके से पहुँच पाते हैं ना। और उसमें एक खुद का भी लाइक मैंने एक कहीं पे पढ़ा था कि जब आप व्हेन यू राइट समथिंग फॉर एग्जांपल अ बुक सो यू मेक न्यू न्यूरल पाथवेज ओके सो वो भी मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी सो एनीथिंग दैट एक्साइट मी सो आई कीप ऑन डूइंग थिंग्स सो और दैट इज अ बिग अचीवमेंट और मुझे मेरे फ्रेंड्स जो है उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया फॉर दिस तो आई वाज फीलिंग यार कूल यार काफी अच्छा मतलब ये मिल रहा है सो दैट इज आल्सो गुड तो इस तरह से काफी लाइक वो भी एक इंस्पिरेशन था तो इस तरह से होते गए तो अच्छा, नाइस। लाइक ये एडवेंचर्स एंड इफ अगर यस न्यू पाथवेज हम्म बन रहे, इफ योर ब्रेन इज हम्म गेटिंग हम्म इवन मोर शार्पर एंड इंटेलिजेंट, व्हाई नॉट? एग्जैक्टली यही यही था लाइक यही चीज है लाइक दिस इज आल्सो एडवेंचर लाइक जो हम लोग ऐसे ये थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में जो सोचते हैं एडवेंचर बट देयर आर थिंग्स बियॉन्ड ये थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड जो कि आपका यू नो देयर इज योर व्हाट वी कैन से स्पिरिचुअल realm या फिर इस तरह का तो उसमें भी हम्म, यू गेट टू नो मेनी थिंग्स सो दिस इज वन ऑफ एडवेंचर लाइक इन योर ब्रेन यू आर क्रिएटिंग न्यू थिंग्स so there is a kind of study for that. So अगर वो study हो जाती है तो then you got to do ऐसा. So there is really exciting world get there as well. So that's why. राइट, राइट। Yes. आपकी खुद की एक आईटी फर्म है व्हिच इज कॉल्ड टास Yes. टेक्नोलॉजी, उसके बारे में Yes. बताइए। लाइक Okay. So आपको कहाँ से, या प्लीज गो ऑन। हाँ वेयर? हाँ हाँ I understood. ओके सो टास्क टेक्नोलॉजीज का कैसे हुआ कि द सेम अगेन ये थोड़ा इंस्पिरेशन लाइक एक हॉलीवुड मूवी से भी है एंड आईटी का भी है ओके सो हम लोग जब यहाँ पे नागपुर में लाइक एक बुद्धिस्ट यूथ एम्पावरमेंट संघ करके एक संघ बोल सकते हैं या तो फिर यूथ के लिए एक कुछ स्टार्टअप किया था विमल कीर्ति गुणश्री बनते जी ने तो उस समय में हम लोग कुछ लोग मिले एंड कुछ यूथ हम लोग साथ में आए एंड देन वहाँ पे काफ़ी अलग-अलग जो हमको फ्रेंड्स बने और लोग मिले। तो हम लोग साथ में मिलके हम लोग कुछ एक्टिविटी करते रहते थे लाइक कुछ सिटिंग सॉरी सिटिंग्स हो गया और कुछ बुद्ध धम्मा का बुक पढ़ना हो गया, है ना? और इस तरह से और भी कुछ एक्टिविटी हो गई जो यूथ हम लोग करते हैं, दीक्षा मूवी पे कुछ क्लीनिंग का एक्टिविटी हो गया, तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करते थे। देन वहाँ पे कुछ लोग मिले, उसमें से मेरे फ्रेंड बने आनंद कौशल। सो आनंद कौशल वाज़ आल्सो लाइक वो जो थे सिविल इंजीनियरिंग से थे बट उनका इंटरेस्ट था थोड़ा आईटी फील्ड में। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ मैट्रिमोनी ऐप बनाना था उनको तो हम लोग बस ऐसे ही बैठते थे एंड देन वी स्टार्ट डूइंग थिंग्स कि चलो किस तरह बन सकता है, क्या बन सकता है, तो वे हम लोग स्टार्ट किए कुछ रिसर्च करना, है ना? तो इस तरह से हम लोग वी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च फिर किस तरह से किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, ये सब हमने चालू किया। देन वहाँ से धीरे-धीरे हम लोग का कनेक्शन था ही, देन वहाँ से हम लोग ने और कोशिश करी कि और क्या किया जा सकता है। तो उससे फिर हम लोग ने एक ऐप बनाई दिया एंड देन उसके बाद में उनका वो बिज़नेस एज़ अ बिज़नेस उन्होंने सेटअप किया एंड वो बिज़नेस को सेटअप करके वो बिज़नेस चलाने लग गए और वो एप्लीकेशन भी एक बन गया मेट्रोमनी का। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, हम लोग लाइक एज़ अ बिज़नेस भी कर सकते हैं एंड हम लोग एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, हम लोग आईटी में भी काम कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन हम्म, वहाँ से ऑलरेडी था। बट देन आनंद वाज़ डूइंग वो कर ही रहे थे साथ में। तो फिर हम लोग लाइक देन आई वेंट फॉर द जॉब इन पुणे फिर वो पुणे में जॉब चल रहा बट उनके साथ में एसोसिएट था मैं एज़ अ बिज़नेस एसोसिएट आई वाज़ वर्किंग फॉर देम। सो जो भी प्रोजेक्ट्स आते थे सो आई यूज्ड टू टेक द प्रोजेक्ट एंड देन डिलीवर टू हिम तो इस तरह से हमने साथ में काफ़ी काम किया कोलैबोरेशन में। एंड देन उसके बाद में फिर लाइक एज़ आई टोल्ड यू 2018 में आई केम बैक और फिर 18 में मैंने लाइक यहाँ पे आके तो फिर आनंद जी जो है उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया सो काफ़ी प्रोजेक्ट्स बढ़ गए थे, उनकी तरफ भी उनकी टीम भी हैंडल लाइक काफ़ी बड़ी टीम हो गई थी, स्टिल प्रोजेक्ट बढ़ने की वजह से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यू स्टार्ट योर टीम एंड यू जस्ट मैनेज योर टीम तो इस तरह से फिर हम लोगों ने सोचा देन उन्होंने ही चालू किया एंड देन उसके बाद में उसके साथ में हम लोग ने आईटी का जो है तो उनके इंस्पिरेशन से तो विमल कीर्ति गुनसिरी भंते जी की वजह से बोल लीजिए देन आनंद कौशल की वजह से बोल लीजिए, हमारे फ्रेंड्स की वजह से बोल लीजिए, यूथ यूथ एम्पावरमेंट संघ की वजह से बोल लीजिए। तो ये सब इंस्पिरेशन थे, जो लोग थे हमारे, वही इंस्पिरेशन थे। काफ़ी सपोर्ट किया सबने, काफ़ी हेल्प भी किया और फिर बाद में लोग जुड़ते चले गए। तो इस तरह से ये टार्स का जो है और जैसे मैंने बताया एक हॉलीवुड मूवी है, तो उसमें टार्स इज़ द लाइक वन ऑफ द बॉट लाइक जो रोबोट बोल सकते हैं, जिसको बॉट बोला जाता है। सो दैट यूज्ड टू so that was the one bot which
which bring out the information from black hole. The Interstellar movie से थोड़ा inspiration आया था, so वो मुझे काफी fascinating लगा था कि there is one bot which can take or decode the information from the black hole. So that is a singularity. So that is more kind of fascinating thing for me. So that's why I kept Mm. the name TARS, TRS stars. Yeah, that's Oh, one of the inspiration. that's Yeah. Yes. interesting. Yeah. Uh, You have multiple layers in your personality. I would say you are okay. adventurous, you are Yes. intelligent, you are like you Okay. are an, I'm saying you're intelligent. I'm sorry if it Okay. came out Thank like you. that, but you're Yes. into spirituality, but also Hollywood and films, and Yes. you like music. I saw Yes. your jam Yes. session, so Yes. it's packed in one. Yeah. Yes, yes, everything. Like I'm kind of rich. Like actually, I when I write my bio in social media or something, so I my first word is breaking stereotype. Okay, so the thing Hmm. is कि when you become a stereotype, then you stop yourself, right? क्या होता है कि तुम एक प्रकार के इंसान बन जाते हो, एक तरह के इंसान बन जाते हो, एंड देन Hmm. आप वही मान्यता को और वही वही चीजों को ढोके चलते रहते हो. So you Hmm. should be always be ready for the things कि क्या हो रहा है सामने क्या चल रहा है तो अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो एंड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस यू शुड बी रेडी फॉर द चेंज ओके सो Hmm. अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेन थिंग लाइक बुद्ध ने भी कहा है कि जो Change is अनिश्चित the स्थिति only constant. yeah. Yes, yes. So that is the thing. So that's why make things in your brain कि ये ऐसा ही होता है वो वैसे ही होता है. So question everything. Even Buddha has said कि यही पस्सी को अपनाए को मतलब कि आओ और देखो अगर ये आपके लिए फिट है तभी आप करो. Okay. So that's why. Hmm. So like इससे अच्छी और चीज क्या हो सकती है, right? So that's why I Yeah. question everything. Even my beliefs I question every day. Even like what I'm doing, is it right or wrong? I question every day. Okay, so then I come up with Okay. answers with that. So when you question yourself, you come up with answer. So just don't follow any kind of ritual or anything. You just because human being जितने भी चीजें चल रही है दुनिया में जितने भी धर्म समाज जो भी बनाए गए ह्यूमन बींग्स नहीं बनाए. Okay, so what is the Hmm. best thing you can do is you can what is applicable for you, you live with that, and your truth is true for you, and mine truth is true for me. As I, so like everyone having their own truth, so we should be respecting every religion, every person, every human. And so this is one of the thing I learned. So like Buddhism tells this, so we shouldn't be criticizing anyone. तो क्या होता है कि कम्युनिटी में यूजुअली मैं देखता हूँ कि दे जस्ट कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग. अरे मैंने ये देखा Hmm. इसको ये तो गलत करता है ना. सो लाइक Yeah. वो जो जो एक अभी बोलते हैं ना कि लाइक बुरा जो देखन में चलिया बुरा मिला ना कोई जो खुद को Hmm. देखा तो मुझसे बुरा ना कोई. सो जस्ट लुक इनटू योरसेल्फ एंड आपके अंदर क्या बुराई है That's उसको Kabir एरेडिकेट करो. Doha, right? Yes, exactly. So like people, what they do is कि इसने ये किया, उसने वो किया, they keep on judging. So you are not a judge, you are not qualified. अगर आप होते तो फिर you'll be sitting on the judge chair, right? So ये सब चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में. So I just try to remove all this conditioning and all this thing from my book, from my thoughts, whatever I can do, and I just like propagate कि like if someone is doing some things, that means they are learning, right? So life is a journey. सभी का एक journey है. Unless and until they won't fall into that pit या फिर जो circumstances है या फिर जो भी उनके साथ condition है, they won't learn anything. So life itself is a process. Life itself is a spiritual journey. Life itself is teaching you a lot of things. So it just be how you learn. Sometimes you learn from your own mistakes. Sometimes you learn from others' mistakes. And the awakened person is one who understands and learns from others' mistakes and don't do their own mistakes repeatedly. So these are these are the thoughts. Well said. I really Uh, Last thing, आप हमारे audience को क्या बताना चाहेंगे? Like the message you will like to give the audience watching you. I know they must okay. be having many questions which will Yeah, be yeah. answered in comment section, Uh-huh. but the message Uh-huh. for now. Okay, so I really don't want to give any message because मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सबका अपना-अपना एक ट्रुथ है, ठीक है? So just don't follow a cult, don't follow only one kind of thing या फिर don't fall into कि ये ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही होता है. You find by yourself, find your own answers, okay?
try to meditate, get to know yourself, spend time with yourself, develop sati. आप खुद अवेयरनेस प्रैक्टिस करो. सो कुछ नहीं है, सिंपल चीज है. लाइक अवेयरनेस प्रैक्टिस करना है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना है, ब्रीदिंग टेक्निक्स. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर साइकेडेलिक दैट गेट टू नो योरसेल्फ. जितना ज्यादा आप खुद के साथ स्पेंड करोगे, हाउ मच यू नो योरसेल्फ, दैट मच यू नो अदर पीपल, राइट? सो Right. बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस आई नो माई सेल्फ लिटिल बिट. सो जितना ज्यादा मैं लोगों से मिलता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कि हाँ, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर ये किस तरह का पर्सन है, या फिर क्या होता है. So all this power you got to, अपने आप आ जाती है. So that's why I see, like, so what I would like say is कि just simple things करना है, follow the 5 precepts, try to follow as much as possible, and spend time with yourself and try to be happy. और जब भी like हमारे साथ में कोई भी instance होता है, तो we got easily offended या फिर sad, तो just try to break that chain. Okay, just try करना है हमको कि हम जो फील कर रहे हैं, अगर एक बुरी फीलिंग आ रही है, सैडनेस वाली फीलिंग आ रही है, सो यू हैव टू फाइट योर सबकॉन्शियस. आप खुद से फाइट करो एंड ब्रेक दैट फीलिंग एंड से कि नहीं, मुझे इस तरह का फीलिंग में नहीं रहना है, आई वांट टू बी हैप्पी. ठीक है, तो हैप्पी रहने के लिए Mhm. कुछ लोगों की मदद करो. ओके, व्हाटएवर जो भी चीज आप कर सकते हो, लोगों के साथ बात करो, लोगों को मिलो. और अपने जब आप खाली समय में खुद के साथ रहते हो, खुद को फील मतलब करो कि किस तरह आप फील कर रहे हो, एंड देन उसमें उसमें वर्कआउट करो. So meditation helps a lot. Talking with people helps a lot. Reading helps a lot. And just if कुछ नहीं तो just go into nature and you know एक बड़े से पेड़ को पेड़ के नीचे बैठ जाओ, या तो फिर पेड़ को टच करो. So because nature has this ability to soak your negativity and all these things. So there are every answers has been given, and explore things. Don't be surrounded by like a type of people only. एक्सप्लोर, मीट न्यू पीपल, गो हियर एंड देयर. बहुत सारे लोगों से मिलो, बात करो, काफी चीजें करो. सो यू विल बी फाइन. सो दैट इज द थिंग आई वुड से. या. Okay. They say you can't pour from an empty cup. Like, यस. जैसे आपने बोला कि खुद से स्टार्ट करो, लव योरसेल्फ फर्स्ट, वर्क ऑन योरसेल्फ, और फिर आगे आप जितने हेल्दी हो, आपको जितना नॉलेज है, यू विल पास इट ऑन. इफ यू आर yourself suffering and healing, you can't help others. I think that's एग्जैक्टली the ट्रू. key message we will take. Thank you, एग्जैक्टली. Sumedh, for being एग्जैक्टली. with us. We really enjoyed talking with you. And I have many questions, but we have to end it somewhere. Okay, okay. Thank you so much, Pranjali. Thank you for having me. It's nice talking to you. Thank you. Thank you. Hi, if you enjoyed this video, make sure you subscribe to the Aesthetic Blue podcast, like it and share it with all your friends, families, and like minded people, and watch the space for more meaningful conversations. Jai Bhim.